and with 0, when both are 1 1, output is 1. 1 क्यों हुआ? क्योंकि टॉगल किया कौन से वैल्यू को? Q वैल्यू को. So Q value is 0, so that's why toggle to 1. Like this. Next 1 with 0 0, 1 रहेगा. 1 with 0 1, 0 because reset. Then 1 with 1 0, that is set, and 1 with 1 1, it should be 0. It will be printing mistake. It should be 0. Okay, because previously value was 1, so this should be toggle. That should be 0. So here which position there is 1? 0 0 1 2. Here 2 3 4 and 5 6. So you can check in the K map. This is 0 1 2 3 2 3. This is 4 and 6. So by putting in the K map, we get the expression of next state. That means if the Q value is known to you, if the J and K value is known to you, you can find out the next state of the JK flip-flop. Have you understood? Have you understood? Yes, ma'am. Okay. Next, excitation table of JK flip-flop. Can you find out? Excitation table of JK flip-flop. Tell me, can you find out or not? Hello? Excitation क्या होगा? Previous value was 0. Next value should be 0. In which condition? Either 0 0, नहीं तो 0 1. Yes or no? Hello? You can check here. देखो, previous value 0, next value 0. कौन से condition में आया? कौन से condition में? 0 0 and 0 1. वेरी गुड. तो हम लोग बोल सकते हैं कि J is 0, K is don't care. That means either 0 में आएगा नहीं तो 1 में आएगा. तो देखो यहाँ पे previously 0, next value is 1. Which condition? क्या लिख सकते हैं? दोनों कंडीशन में आता है. 0 से 1 आता है. 1 1 0 या फिर 1 1. तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 1 डोंट केयर. अरे 1 डोंट केयर मतलब जे वैल्यू तो ऑलवेज 1 होगा. के वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. तो 1 डोंट केयर लिख सकते हैं कि नहीं? फिर जब 1 प्रीवियस वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू 1 आएगा. कौन से कंडीशन में? प्रीवियस देखो, डोंट केयर 1. डोंट केयर 0 होगा ना. देखो 1 था, अभी यहाँ पे 1 है, तो कौन से पोजीशन में? कैसे 0 0 में है, फिर 1 से 1 1 0 में है, 0 0 में 1 से 1 है, फिर 1 0 में 1 से 1 है. तो 1 से 1 के लिए क्या होगा? डोंट केयर 0. यहाँ पे देखो 1 से 1 के लिए डोंट केयर 0 एंड 1 से 0 के लिए प्रीवियस वैल्यू 1 होगा, नेक्स्ट वैल्यू 0 होगा. देखो ये प्रीवियस 1 है, नेक्स्ट वैल्यू 0 है. कौन से पोजीशन में? 0 1 एंड इज 1 1. तो हम क्या लिखेंगे? डोंट केयर 1. हैव यू अंडरस्टूड? हेलो? Yes, ma'am. तो देखो प्रीवियस वैल्यू 1 है, नेक्स्ट वैल्यू 0 है, तो 1 डोंट केयर. प्रीवियस वैल्यू 1 है, नेक्स्ट वैल्यू 1 है, तो 0 डोंट केयर. प्रीवियस वैल्यू 0 है, नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस वैल्यू 0 है, नेक्स्ट वैल्यू 1 है. सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया. मैं प्रीवियस 0 है, नेक्स्ट 0 है, तो दैट इज 0 डोंट केयर. प्रीवियस 0, नेक्स्ट इज 1 1 डोंट केयर. प्रीवियस 1, next 0, that is don't care 1, and 1 1, that is don't care 0. So this is the excitation table of JK flip-flop. Okay. Okay. So now tell me, so whenever we are in the flip-flop, we are taking 2 input, then how many combinations we are getting? How many combination? Hello? How many combination? 4. 4 combination.
And in SR flip-flop, only 3 valid combination, one is invalid combination. But in case of JK flip-flop, we are getting 4 valid combination. So out of these 4 valid combination, if in both the cases in JK flip-flop 2 inputs are there, suppose we want to design a flip-flop with single input. Okay, so in the single input, out of this 4 combination, what are those combinations? Out of this 4 combination, that is 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So if 2 input we are putting at a single input, मतलब 2 input को अगर हम single input बनाएंगे तो क्या होगा? Either हम ले सकते हैं दोनों को सेम लगा, दोनों को सॉर्ट कर दें, both J and K को सॉर्ट कर दें, तो क्या होगा? If I am giving 0, then both are getting 0, 0 and 1, 1. Okay, so this type of combination I have taken as one flip-flop. That means only one input I will give and 2 inputs will get the same. मतलब दोनों जो input हम यूज करेंगे अभी उसको हम सिंगल इनपुट यूज करेंगे. तो अगर हम इसको 0 देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 आएगा. अगर यहाँ पे 1 देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा. So this is nothing but the T flip-flop. If the JK flip-flop, both the inputs are sorted, then that type of flip-flop is known as T flip-flop. Okay, so this one is known as, this is your T flip-flop. T flip-flop. This is your JK flip-flop. JK means your Q bar is connected to J input and Q is connected to K input, and the clock is applied to both the NAND gates. And this is a J and this is your K. So when both J and K are sorted, and that will be represent a single input. So if this value is 0, both will be 0, 0. So 0, 0 means Q में आएगा क्या? Memory. Whatever the previous value, next value will be coming as memory. And when it will become, when this T value is 1, so both the input should be, both the J and K will be 1, 1. So when both the J and K will be 1, then output will be what? Hello? In JK condition, when both are 1, 1, what will be output? Tell me. अरे आउटपुट क्या आएगा बोलो? मैम इट विल बी आइदर 0 1 और 1 0. नहीं, ये आएगा तुम्हारा आइदर 0 1 1 0. क्या 1 तो एक ही तो आउटपुट है ना. हम लोग क्यू बार को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन हमारा आउटपुट 1 आता है या 2 आता है? हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप इज ए सिंगल बिट स्टोरेज डिवाइस और डबल बिट स्टोरेज डिवाइस. मैम सिंगल बिट. तो सिंगल बिट मतलब हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट? अरे आउटपुट हम कहाँ से लेते हैं? क्यू से लेते हैं या फिर क्यू बार से? क्यू से. ओनली क्यू को ही कंसिडर करते हैं. क्यू 0 मीन्स द स्टेट इज 0. क्यू 1 मीन्स द स्टेट इज 1. We are checking that Q bar should be complement each other. लेकिन हम लोग का आउटपुट 2 आउटपुट नहीं है, हम लोग एक ही आउटपुट कंसिडर करेंगे. तो मैं ये बोली थी अगर मेरा इनपुट सिंगल इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा? whatever may be the previous value of Q, that will be remain as it is. अगर previous value 0 है तो 0 रहेगा, previous value 1 है तो 1 रहेगा. And when the P value is 1, same both are giving the inputs are 1 1. तो जब J and K का 1 1 हो जाएगा तो हम लोग क्या देखे थे? JK का जो ये था ट्रूथ टेबल था, क्या था? टॉगल ऑफ Q. मतलब if the 2 inputs of the JK flip flops are same, then output is Q bar. अगर Q 0 होगा तो ये 1 आएगा,
अगर 1 होगा तो 0 आएगा. Okay? Have you understood T flip flop? Have you understood? Yes, ma'am. JK, in the JK flip flop, if we sorted both the inputs, that will becomes a T flip flop. Okay. And then here, this is the graphical symbol of T flip flop. So when both the J and K inputs are sorted, that is also T flip flop. As well as from the D flip flop, we can derive the T flip flop. So first we know that what is D flip flop. So JK flip flop will be derived from the, D flip flop is derived from the JK flip flop. Okay. And D flip flop, you can see this diagram. This D flip flop is derived from the SR flip flop. In the SR flip flop, there are 3 valid conditions. One is 0, 0, another is 0, 1, another is 1, 0, and 1, 1 condition is invalid condition. So in between, among these 3 conditions, if we are taking a single input, तो single input लेने में तुम्हारा जो SR में 3 condition valid होता है 0, 0, 0, 1, 1, 0. अभी हम क्या करेंगे, इसी SR में हम लोग क्या करेंगे, single input will be applied. So by combining these 2 inputs, SR का 2 inputs को combine करके हम single input देंगे. तो यहाँ पे अगर हम सिंगल इनपुट 0 देते हैं तो 0, 0 आ जाएगा, एसआर में 0, 0 आ जाएगा, तो आउटपुट तो तुम्हारा मेमोरी देंगे. बट अगर 1 देंगे तो कौन सा वैल्यू आएगा, 1, 1 देंगे तो क्या आएगा, हेलो, 1, 1 देंगे तो क्या आएगा एसआर फ्लिप फ्लॉप पे, फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन हो जाएगा. सो फॉर दैट केसेस वी आर जस्ट कंसिडरिंग इन द एसआर फ्लिप फ्लॉप these 2 combination. This combination we are not accepting, because if 0 will be applied, both should be 0, 0. If 1 will be applied, both should be 1, 1. And 1, 1 is not the valid condition. So that's why which 2 conditions we are considering, because 8 input मतलब क्या है कि 2 मतलब 8 input यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, या फिर 1 होगा, 0 होगा. So as these 2 inputs are complementing each other, so that's why I have put a inverter in between this S and R. So this is S and this is R. So when D value in single input is 0, then S will be 0 and R will be 1. So जब R 1 होगा तो Q क्या होगा? R 1 means Q is, tell me, Q is, अरे रिसेट वैल्यू जब एक्टिव होता है तो आउटपुट क्या आता है, हेलो, हाँ, reset active means output is 0. Okay, and when D is 1, so S is 1 and R is 0, so output is 1. Output is 1. So here, when in the D flip flop, when the input is 1, output is, sorry, when the input is 0, output is 0. When the input is 1, output is 1. So thing is that if whatever may be the input and output are same, then what is the necessity of this delay, this D flip flop? So this one is known as, D stands for delay, or you can tell data flip flop, data. Okay, so what do you mean by data? That means if in the data, if you are giving 0, then output will be 0. For how much duration? This is the propagation delay of this circuit. Suppose ये processing होने के लिए 20 सेकेंड लग रहा है, तो जहां पे input 20 है, after 20 सेकेंड तुमको 0 ही मिलेगा. So in which cases, suppose I want that whatever my input, that should be my output, but after some time, then in that purpose cases we will use D flip flop. Because in other flip flop, if the input changes, output is changes. But in these cases, what happens? Whatever the input, that is the output. That's why data flip flop. So you can check the truth table or statistic table. That is, when the clock is 0, don't care, and whatever may be the Q value, output is no change.
But when the clock is applied, positive is, that's why aroma, positive aroma. When the positive is clock is applied, अगर डाटा 0 है तो आउटपुट भी 0 आएगा, अगर डाटा 1 है तो आउटपुट 1 आएगा. So that's why it is known as data flip-flop. And characteristic table कैसा होगा? प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 है, मतलब डाटा भी देना पड़ेगा 0. प्रेजेंट 0 है, 1 आएगा मतलब डाटा देना पड़ेगा 1. यहाँ पे 1 है, अगर 0 हो रहा है, कैसे हो रहा है? Because giving the data 0, then next state will be 0. If the value is 1, next state will be 1. So next state का expression you can find out. What is the next state? 0, 1, 0, 1. Data is 0, 1, 0, 1. So that's why characteristic equation is nothing but qt plus 1 is equal to d. Have you understood? Qt plus 1 is equal to d. Have you understood? Yes, ma'am. Okay. So like this is the D flip flop. So SR flip flop में जो दोनों condition है 0, 1, 1, 0 condition. So that if I am giving the single input, because S and R conditions, S and R inputs are complementing each other. In case of 0, 1, 1, 0, if I am giving single input to the D, then we are getting same output. It will be used for your time delay. तो कहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे? सपोज तुम एक प्रोसेसर में, जो मल्टी प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर का आउटपुट तुम्हारा 0 है, वो 0 रहेगा. अभी तुम दूसरा काम कर रहे हो, तो अगर तुम दूसरा काम कर रहे हो तो ये आउटपुट तुम्हारा भी ड्यू टू सम रीजन वो 0 से 1 हो सकता है. तो वहां पे तुम क्या करोगे? वही आउटपुट में एक फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे, डी फ्लिप फ्लॉप. तो वो क्या करेगा? अगर 0 है इनपुट तो आउटपुट भी तुम्हारा क्या होगा? 0 ही होगा. लेकिन आउटपुट तब तक निकलेगा जब तक तुम्हारा प्रोसेसिंग चला है, या फिर प्रोपेगेशन डिले, मतलब जो NAND गेट ऑपरेट होने के बाद ही तुम्हारा आउटपुट 0 आएगा. तो वो जो टाइम तक तुम्हारा 0 ही आएगा. 0 था, तुम चाहते हो 0 मेरा 20 सेकेंड तक रहने के लिए, तो यहाँ पे तुम डी फ्लिप यूज कर सकते हो. तो दैट इज फॉर स्टोरिंग पर्पज. सो इन प्रोसेसर for RAM cases we are using D flip-flop. Then T flip-flop, when both the JK flip-flops inputs are sorted, that is becomes a T flip-flop. And if the D flip-flop is given to us, then we can find out the T flip-flop by designing this circuit combination. Okay. And here we can tell that in the flip-flop, if one flip-flop is given to us, then we can design the other type of flip-flop. Now we are discussing the T flip-flop truth table. So clock is 0, that will be just like memory. Clock is 1. अगर 0 है, in T flip-flop T input 0 है, तो दोनों को क्या मिलेगा? J को 0 मिलेगा, K को 0 मिलेगा. So output is just nothing but memory. But if the T input is 1, with 1, if the input is 1, then output is QT dash. That means जो तुम्हारा Q state होगा वो टॉगल हो जाएगा. तो ये अगर 1 है तो ये 0 आ जाएगा. So that is your characteristic table. Then from that characteristic table you can find out, from the characteristic table you can find out the characteristic equation. This is the characteristic equation. In the characteristic equation we can find out the relationship of Qt plus 1 in terms of Qt and T. So here we are getting that is T Q dash plus T dash Q. That means T XOR Q. Okay. And this is the excitation table of T. That means present state 0, next state 0. Present 0 से 0 होने के लिए T को भी 0 होना चाहिए. But present state 0, next state 1 के लिए T का वैल्यू क्या होना चाहिए? हेलो, present 0 है, next state 1 होगा. At what value of T? हेलो, 1. Ma'am, 1. 1. ओके, लाइक दिस 1 था, 0 होगा. कौन से वैल्यू पे? 1. 1. बट 1 था, 1 रहेगा. कौन से वैल्यू पे? 0. 0. So this is the excitation table which is very much important for designing the application of the flip-flop. Okay. So now we have completed latch, then flip-flop, then types of flip-flop, SR flip-flop, then your JK flip-flop, then D flip-flop,
then T flip-flop. So is there any doubt? Is there any doubt? Hello? No, ma'am. Okay. So another flip-flop is master slave flip-flop, and that will be used to avoid the race around condition in case of JK flip-flop. So master slave flip-flop we are not discussing detail because it is not applied to the counter part, but you know the answer of master slave flip-flop. And actually what is happening in the master slave flip-flop, in the JK flip-flop, when the input is both are 1-1, then output is toggle. So toggle मतलब 0 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 होगा, जो भी बार बार वो टॉगल होता जाएगा, 0-1 0-1 वो टॉगल होता जाएगा. तो यहाँ पे अगर मेरा मतलब एक कंडीशन आएगा जहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हुआ होगा, आउटपुट मेरा ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा. ओके, अगर तुम्हारा प्रोपागेशन डिले का जो कंसेप्ट है, तो अगर वो मतलब तुम इनपुट दे रहे हो, so if one race around condition will be occurring in case of JK flip-flop, so that race around condition means if it will be toggling very frequently, then we can't say that which at a particular point whether it is 0 or 1. So for that, avoid that one, we are using two JK flip-flops cascading to each other, and that is known as the master slave flip-flop. One is master, another is the slave flip-flop. So that master slave flip-flop we are using to avoid the race condition. Okay, you just know this one. Maybe sometimes in the questions you will face this one. Otherwise, details it is not required. If it is required or any questions will come, then we will discuss that one. Then by the concept of this flip-flop, we will come to the application of the flip-flop. So what are the applications of the flip-flop? That are basically in your course we are discussing, that is, one is counter, another is shift register. So can you tell me what do you mean by counter and what we are going to do in the counter design? What do you guess? Counter जो device है, what is that one? Hello? Counter device क्या करेगा? Hello? Hello? Tell me, counter क्या करता है? सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप तो कनेक्ट कर देगा. हाँ, क्यों? पता नहीं. नहीं, नॉर्मली बोलो. काउंटर मतलब क्या करता है? Why it is known as counter? अरे काउंट करेगा ना. काउंटर नेम मतलब वो काउंट ही करेगा. ओके, सो here I am explaining. Suppose counter means a digital device which will count the number of events. Suppose any event is occurring, or for example तुम्हारा जो काउंटर है, तुम्हारा सपोज यहाँ पे एक पार्किंग लॉट जैसे मैं बोली थी, सपोज पार्किंग लॉट में तुम्हारा मैक्सिमम जो 16 व्हीकल्स, जो फोर व्हीलर व्हीकल्स विल बी देयर. सो तुम एक जो काउंटर यूज करोगे, तो अभी कितना तुम्हारा व्हीकल है. अगर फर्स्ट व्हीकल है तो दैट विल बी शोइंग 1, देन नेक्स्ट विल कम, दैट विल बी शोइंग 2. सो लाइक दिस इट विल बी काउंटिंग अप टू अगर तुम्हारा 16 माने 16 काउंट के लिए है, तो क्या कितना काउंट करेगा? अगर 0 से स्टार्ट होगा तो 15 तक लेगा, नहीं तो 1 से स्टार्ट होगा तो कितना तक लेगा? 16 तक लेगा. ओके, यस और नो? हेलो? यस मैम. तो नॉर्मली हम लोग क्या है, जहाँ पे सपोज 16 नंबर को काउंट करते हैं, तो हम बाइनरी रिप्रेजेंट करेंगे. तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मतलब we are just so binary representation means suppose 16 it will be counting from 0 to
15. So how many bits are required? How many bits are required? It will count from, हाँ बोलो, हाँ 4 bits. 4 bits, 4 bits, okay. So 4 bits means it will be showing from 0, 0, 0, 0, 0, 0, sorry, 0, 0, 1 up to 1, 1, 1, 1. ये शो करेगा कि नहीं? तो जब जब तुम्हारा 0, 0 होगा, this will be showing 0, decimal 0. This will be showing 1. Like this will be showing 15. Yes or no? Yes or no? Tell me. Hello? Yes, ma'am. So now tell me that here 4 bits, and to store a single bit, which device you are using in digital? To store a single bit, which device you are using? Ma'am, flip-flop. Flip-flop. So here to store 4 bits. So how many flip-flops? Ma'am, 4. 4 flip-flops. So this is one flip-flop, this is another flip-flop, this is another flip-flop, this is another flip-flop. So 4 flip-flops are there. So this flip-flop may be JK, maybe T, maybe D, any type of flip-flop, that is totally depend upon the user, which type of flip-flop he wants to use. Okay. Then what happened? If the present state, इसका मतलब देखो हम लोग कैसे एनालिसिस कैसे करेंगे. सपोज प्रेजेंट स्टेट इज 0, 0, 0, 0. नेक्स्ट हमारा क्या काउंट करेगा? क्या काउंट करेगा? क्या काउंट करेगा बोलो? 0, 0, 0, 1 होगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो ये फ्लिप-फ्लॉप का अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? Ma'am, 1. नहीं, यहाँ पे देख रहे हो 0, 0, 0, 0. नेक्स्ट स्टेट है 0, 0, 0, 1. तो ये तो एक ही फ्लिप-फ्लॉप है ना. इस फ्लिप-फ्लॉप का प्रेजेंट स्टेट क्या है? प्रेजेंट स्टेट मतलब इसका अभी कंटेंट क्या है? 0. फिर नेक्स्ट पे कंटेंट क्या होगा? 0 रह रहा है. हाँ, तो क्या इनपुट दोगे वही फ्लिप-फ्लॉप को जो नेक्स्ट कंटेंट को वो 0 दिखाएगा. वो तुम्हारा लॉजिक है. प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 होगा, तो क्या इनपुट दोगे? बिकॉज वी नो दैट एक्साइटेशन टेबल that if the present state, मतलब Q is 0 and Q T plus 1 should be 0 or 1, what should be the input value? That I know from the excitation table of various flip-flops. So यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा present state मतलब 4 flip-flop का आउटपुट क्या है? ये आउटपुट है 0, 0, 0, 0. अभी नेक्स्ट काउंट क्या करेगा? 0, 0, 0, 1 करेगा. मतलब ये 0 से 0 रहेगा, ये 0 से 0 रहेगा, ये 0 से 0 रहेगा, बट ये 0 से 1 होगा. तो क्या क्या इनपुट दोगे फ्लिप-फ्लॉप को जो वो 0, 0, 0 से 1, 1, 0, 0, 0, 1 करेगा. फिर नेक्स्ट क्या है? 0, 0, क्या लिखूंगी? क्या लिखूंगी? 1, 0. हाँ, 0, 0, 1, 0. नेक्स्ट 0, 0, 1, 1. Then 0, 1, 0, 0. Yes or no? Because it will be counting from 0 to 15. So ये तुम्हारा क्या है? स्टेट है. तो हमको अभी डिजाइन करना है कि 4 फ्लिप-फ्लॉप को कैस्केड कनेक्शन करना है और वो कैसे यही स्टेट, इस स्टेट के बाद ये आउटपुट दिखाएगा, ये स्टेट के बाद ये आउटपुट दिखाएगा, नेक्स्ट ये आउटपुट दिखाएगा, ये आउटपुट दिखाएगा. सो we have to design that circuit. Have you understood? वो सर्किट हम डिजाइन करेंगे. 4 फ्लिप-फ्लॉप का जो कनेक्शन होगा या फिर इनपुट कनेक्शन कैसा होगा, so that it will be counting from 0 to 50. अच्छा, नेक्स्ट इसका अगर हो गया 1, 1, 1, 1, फिर नेक्स्ट क्या काउंट करेगा? नेक्स्ट क्या काउंट करेगा?
अरे 15 के बाद फिर क्या 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 काउंट करेगा? हेलो, Zero. वेरी गुड। 1 1 1 के बाद फिर से वो 0 0 हो जाएगा। मतलब दिस counter device we are going to design that will be counting maximum from 0 to 15, उसके बाद वो 0. So like this, any bit of counter you are going to design. So जो काउंटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मैं डिजाइन करूंगी काउंटर को, वो मेरा काउंट करेगा। मतलब देखो यहाँ पे 15 काउंट कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरा 4 बिट काउंट करेगा, दैट विल बी काउंटिंग फ्रॉम 0 1 2 3। अगर मैं ये चाहती हूँ कि वो काउंट करेगा 0 फिर 2 देन 4 देन 6, देन मैं चाहती हूँ कि मेरा 4 4 गैप में काउंट करेगा 0 4 8 देन 16। तो कैसा काउंट करेगा, उसके लिए क्या इनपुट होगा, सो यही काउंट करेगा। सो दैट वी आर गोइंग टू डिजाइन इन द काउंटर। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द काउंटर। अब काउंटर में क्या कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास को पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली काउंटर में क्या कर रहे हैं दैट इज द लॉजिक। ओके, नाउ यू डू द क्विज। Okay, I have sent the link. Have you got it? Yes, ma'am. Okay, do it now.
Okay, thank you all. You can submit your quiz. Yeah. Thank you, ma'am.